टीम में दिया रहेगा। हाँ लाल वाले अपने, हाँ ये ऑरेंज वाले बैग में। मेरे को बिना बताए डाला उधर है, मेरे को बिना बताए डाला। जल्दी जाओ प्लीज भाई, जल्दी जल्दी खाली करो, जल्दी जल्दी खाली करो विजय भाई। आगे सिद्धू दे दे, अंपायर उन लोग को दे दिया, उन लोग को दे कैमरा वाले को दे दिया, अंपायर को। विजय भाई ये बोतल भी लेके चल ली है साथ में। उधर बैठा बॉल पर पहला बॉल से कौन मारा ये ऑरेंज वाला आपका बैग है ना, ये वाला। हां बैक को भी इधर रख दो। हां वो तो एक्शन के चक्कर में सिचुएशन खराब हो जा रहा है। अक्षर भी पहले से ही हुआ है। एक बंदा में जस्ट बात आया। Good morning. The second match of the day, Lions versus Bulls. Bulls have won the toss, elected to field first. Sai Kharat and Pawan Jadhav, the opener batters for Lions. Saurav Gupta. किधर दो बॉल हुआ ना? एक साल बाद फोन देना पड़ेगा। नंबर क्या स्टेशन जाते हैं डेली। A good comeback by Saurav after getting that hit over his head for a six from Sai Kharat. We all would love to see the tussle between Saurav and Sai. One, a very good nippy bowler, very cunning, another aggressive batter with a wise head on his shoulders. Hit the edge it was, but very low. Right at the cameraman's cabin for a sweet balance sixer. So 2 sixes in that over. The score moves on to 12. 12. Thank you. 12 धावा झालेल्या आहेत आणि एक चेंडू बाकी आहे. शेवटचा चेंडू, पहिला षटक बुल्स संघाकडनं मारा करतायत सौरभ. निर्धाव चेंडू, एक षटक झालेलं आहे. 12 धावा संघाच्या, लायन्सच्या 12 धावा. It's Vaibhav from Manitanagar end. Will be bowling for Bulls against Pawan Jadhav. पवन जाधव खूपच नावाजलेले फलंदाज, त्यांनी हे मैदान खूप वेळा गाजवलेले आहे आणि आशा करतो की ते त्यांची तडफदार अशी फलंदाजीचं प्रदर्शन आत्ताही करतील. पवन जाधव, पवन, त्यांच्या नावातच पवन असल्यामुळे पवन सारखी ते बॅटिंग करतील ही अपेक्षा.
डिक्लेअर्ड झोन मध्ये गेलेला आहे चेंडू. एक धाव पवन जाधव यांच्या खात्यात. तसंच संघाची धावसंख्या 13. षटक दुसरं. पहिला चेंडू वैभव मारा करतायत पवन जाधव यांना. आणि हा नो सिग्नल दिलेला आहे अंपायर यांनी. षटकार ठोकलेला आहे पवन जाधव यांनी. I request all the players on the ground, request the umpire's decision. They are wise enough to take a call. They are doing a wonderful job since last 2 days, so respect their time, respect and value their decisions. In a full toss delivery to the square leg area for a single. High in the air, Sai Karath not happy with the effort. Girish Chopra calls it's mine and he takes a wonderful catch. Sai Karath will be walking back to the dugout. He didn't trouble the scorers so much actually. Girish is so happy with that catch. I think just during the time of the catch he just slipped. But good balance. Three deliveries in the second over, 21 on the board, one down, one line down from the pack of 11. Harsh Bhosle, the upcoming line rather. We all know how dangerous, how sensible batter Harsh has been over the years. We have seen him bat for the Sharks team couple of years ago, 2-3 seasons ago. He'll be the lion of the team now. A younger lion leading the pack. He will be assisting Pawan Jadhav at the non-strikers end. Has to take a strike against Weber. Weber bowled so splendidly. Good comeback by him after no delivery. Outside the off stump, straight to Girish. He stops a wonderful single. We all know how athletic these two guys are. We all know how athletic these two guys are. They are known for running tricky singles. Weber back into the attack. In the cow's corner, and what a wonderful catch by Akshat. Wonderful catch by Akshat. It was a treat to watch him. He ran almost 3, 4, 5, 6, or rather 10 meters. Was focused on what he was going for. A sad end to Harsh Bhosle. He didn't trouble the scorers so much. So Lions, a bit of shake-up in the dugout now. Two of the prolific batters into the dugout. In walks in a new batter. Ravindra, jersey number 7. The Lions post a big batting lineup. They still have the destructor called Vinod Patel still waiting for his turn. We all know how destruction can be caused by him. It's a no delivery signal by the umpire. In the air, Akshat is the man.
He catches it, but since it's a no delivery, umpire gets a reprieve. I guess this was the second no delivery from Weber for that action. And as per the rules, he has to stop the bowling. I would love to remind the teams, both the teams, 25 minutes has been stipulated time for finishing the innings. If not 25 minutes, an extra player will be called inside the circle. It's Sandesh Vartak. Spectra wide delivery by Sandesh to start with. Extra delivery, extra run into the kitty. Is that an over? Second over? Scores at the end of 2 overs. Scores after 2 overs, please. 24 for the loss of 2 wickets. 24 for 2. Lions have put on the board after the end of 2 overs. Ashwini will be the bowler, bowling the next over. Over number 3 for Bulls. गोखले गोखले या ओखले गोखले A good attempt by Vaibhav for stopping the boundary. Ashwini is the new bowler. Over number 3. Ravindra takes a single, change of strike. Pawan Jadhav back on strike. We are yet to witness the best of Pawan Jadhav in this tournament. We all love to watch his cricket. It's an edge. It was an edge. Harish Yadav unable to capitalize that catch. A life to Pawan Jadhav. A life to Lions. And Ashwini. Such a wonderful bowler he is. Let's waste little time in between the overs. I request the fielders also. Let's avoid juggling the ball from here to there. It will help you save time. In the air. But outside the boundary line for a sweet pelt maximum hit 6. It travels into the one declared zone. Well, as far as happy, the bowler and the Bulls would be happy to see singles coming down. We all know how destructive Pawan can be, and he's trying his best. Such a sweet timer of the ball. A dot. Pawan Jadhav this time goes deep into the crease and hits over the mid-wicket area for a 6. Sweet Pilat sixer from Pawan Jadhav's bat. Scores at the end of this over. 38
after 3 overs for 2. 38 for 2. 3 overs gone down the track. 3 more to come. Can they capitalize on this beautiful start they have had? It's a power over here. Well, I keep on reminding the players and the officials, we have to keep a tab on the 25-minute stipulated time that we have given. We need to follow this strictly today. We've got beautiful and wonderful moments to capture with the finals. If the finals happens on time, I'm sure there'll be a lot more spectators to witness the finale of LCL Season 7. Season 7 brought to you by Trio Fitness. And thank you very much for the sponsors, other sponsors also. We have Satsang Parivar. They are providing drinking water to the spectators and the players and the committee members as well. Dimples, Punjabi Rasoi, Vagrams, and Sweet Palette. Sweet Palette have been giving cupcakes to the Man of the Match awards. So thank you very much once again to all the sponsors here. Advait Savan. Well, that was a blinder by Ravindra to 6 over the square leg area. Sweet Palette 6. I wonder when the cupcakes will be delivered, Sandeep. I've been promoting your brand so much. I've been doing that the same. In the air, in the air, in the air, in the air, and well taken by Aniket. Advait Savan, the man whom Girish Chopra trusts so much. Lanky, tall, pace bowler from Bulls. We all know how valuable this guy is. 44 for 3, 3.2 overs. Vinod Patel. Vinod Patel, I can call him destructive, destruction. You call by any name, Vinod Patel's bat will be a treat to watch. He is known for hitting massive sixes out of the park, from one park to the other. Outside the off stump, Jocelyn delivery. Vinod Patel kept guessing where did it travel. Harish Yadav, the wicketkeeper, has a huge responsibility. He has to be on toes. He has to be so alert. This is what Vinod Patel is known for. He doesn't waste time. He doesn't waste time. His bat just flicks it away for a Sweet Palette 6. 50 up for the team. 50 up for Lions. And Vinod opens his account with a 6. That's what he does best. Another one into the gap, but very well stopped by Akshat. Akshat single. Just imagine if Pawan Jadhav becomes more destructive. These two destructive openers, the batters can do magic with the bat. Well, one goes down the line, the other follows. Pawan Jadhav. Over the cameraman's head, high in the sky, ending the over with a 6. Sweet Palette 6. It's very rare that Advait Savan gets hit for a couple of 6s in the same over. 57 at the end of 4 overs. 57 at the end of 4 overs. Ball aa gaya. Requesting the players from both sides. Let's value the time. Let me remind Bulls, 7 minutes left for you to finish the innings. You have to finish 2 overs in the 7 minutes. I hope umpires are keeping check of it. 7 minutes left for this innings and 2 overs to go for.
Can I have the name of the bowler, please? Bowler का नाम क्या है? हाँ? श्वेतांग. Shwetang. Shwetang is left arm over the wickets. He bowled a dot delivery to Vinod Patel. Very rare thing to see Vinod Patel giving a dot ball. Well, he doesn't want to waste time. Can we see a run out? Vinod Patel was running towards the danger end. Girish Chopra, the fielder. A direct hit would have caused some trouble to the Lions. Pawan Jadhav back on track, back on the strike. Shwetang, the man, left arm over the wicket. Well, it goes in no man's land for a 6 to the deep, long on area for a sweet Palat sixer. Next match किसका है? Rhinos और Vipers. A slower delivery by Shwetang. He knew Pawan Jadhav was ready to whack him. Next match coming up between Vipers and Scorpions. I requesting both the skippers to be ready for the toss during the match interval. Scorpions and Vipers captains for the toss, please. A full toss delivery. It's a 6. End of the over? 70. 74.5. 74.5. One more delivery to go for in this over. Over number 5. Well, he gets his revenge. He gets his revenge. He knew Pawan was ready to whack him over the square leg area. Leg step was open. Good comeback by the bowler. This is interesting. Shwetang, clean bowled Pawan at the last delivery of his spell. Advait Sawant comes back for his final and the team's final over. 6 deliveries more to go. 7-0, 70 in 5 overs. Okay. 70. I like to update Aniket. 7-0, 70. 5 overs gone. Final 6 deliveries of the innings. I hope we are in time, officials. Thank you so much, players, for respecting and valuing the time. 25 minutes is what the stipulated time is. And you are doing a wonderful job. Well, interesting battle between Advait Sawant and Vinod Patel. It's a full toss delivery in the air, straight down the bowler's end for a boundary. Vinod Patel has been picking up the gap so well. Either he hits it out of the park or he hits it between the players. He doesn't want to trouble anyone. 4 to start with, 5 more deliveries to go. 74 the scores move out to. Advait Sawant back on track. Vinod Patel ready. Very wisely kept outside the off-stump line. He just wants to keep it away from the batter. You give him anything in the reach, the ball travels out of the park. This is what Vinod Patel has been known for. But Advait Sawant is not a prodigy no more. He also has got a wise, cool head over his shoulders. He knows what the batter is capable of, but he also knows what his own capabilities are. It's a full toss delivery above the waist high. It's a no delivery. Sandesh was so happy to grab that, but he was not aware. That's a sacrifice by Ramji. He knows
Vinod Patel taking the strike is more important than anything else. So only one, 1+1. 1+1 मैंने बोला. So two runs out of this. No, and there is a free hit here. कितना है? 76 is the score on board. Outside the off stump, way out of the reach of Vinod Patel. Vinod Patel is asking questions to the umpires. Umpire says no. Have they gone for a review? Yes, they have gone for a review for a wide. Non-striker ने बोला ना लेने. मेरे पर भी पर्दा लगा दो. घर पे कलर पहचानने में नहीं आ रहा है. घर वाले बोलते 6 महीने तुम गोरे लगते हो. जैसे अक्टूबर नवंबर शुरू होता है तुम पे पेंट लग जाता है. We'll request the committee to raise the budget and put a shield. कौन सा गरवारे ब्लैक फिल्म. बजट है बड़ा लेकिन हमारा टीम भी बढ़ रहा है ना. अभी त्रिपाठी जी ने बोला 200 प्लेयर ले लो और 2 टीम बढ़ाओ. तो उनको मैंने बोला कमेटी यहीं रहेगी हफ्ते भर. उनको ज़्यादा झलक अच्छी नहीं. हाँ, वो वाली जगह ये उधर सकते हैं. अपने लिए भी अच्छा रहेगा. बस प्रॉब्लम मैक्सिमम हो जाएगा. भाई आलू भी इतना खान खा रहा है. मेरे को इरिटेट हो रहा था बिकॉज ही इज गॉट अ वेरी स्ट्रांग वॉइस. Well, the umpires is right. 2 more deliveries, final 2 deliveries of this 76. 3 to go, sorry, 3 to go. I beg your pardon. Thank you for correcting me, scorers. 3 final deliveries of this innings. Vinod Patel will love to see the maximums. Good anticipation by Advait. He knew he would charge, but he didn't deflect from his line. He didn't deflect from his length. Two more to go. Can we see a maximum from Vinod Patel's bat? Not only me, but all the spectators out here would love to see him hit massive sixes of this final 2 deliveries. Very well bowled. Shwetang going for a direct hit, and what a backup by Sandesh ji. Well, he is truly an outstanding fielder. You just cannot keep him out of the ground. You just cannot keep him out of the game. He's there bowling, he's there. You can see him carrying a catch. What a personality he is. Final delivery of this innings. 2 dots we have seen. Wonderful comeback by Advait. 3 consecutive dots to a batter like Vinod Patel. The score is stabilized on 75, 76, 77 is the target. 76 is what the Lions have managed to put on the board. 77 is the target for Bulls. And thank you very much, Girish and your team. Thank you so much for finishing this innings in your stipulated time of 25 minutes. I'm sure the Lions would also take a leaf out of this. Let us respect the time. We just want to move on with the schedule itself. 77 is the target.
After 2 overs, the score is 16 for 2. The score is 16 after 2 overs.
After 3 overs, the score is 23. Good morning. Last 10 minutes, त्रिपाठी जी. तो आपको टाइम पास करना भी नहीं है, मैच चालू है, कैसे करोगे? अभी तक के सारे मैचेस टाइम विद इन टाइम, और ये आलिम आलोक जी ने इतना बढ़िया फील्डिंग किया वहां पे. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी. आलोक ने अपना ये हरवीर को भेजा था ग्रुप में कि भाई जर्सी का नाम सबका चेक करके बता, उसने ऑल गुड बोला, वही प्रिंट हो गया. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे. संदेश्वर तक स्ट्राइक पे, अमन अपनी गेंदबाजी से सटीक लाइन एंड लेंथ से गेंदबाजी कर रहे. अगली गेंद, और ये अमन अपनी गेंदबाजी से रन्स में अमन लाते हुए. स्कोर क्या हुआ? 3.4, 24 रन. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे. ये वनडे मैच नहीं है, 6 ओवर्स LCL सीजन 7 ब्रॉट टू यू बाय ट्रायो फिटनेस. क्या बढ़िया गेंद, इनसाइड एज टुवर्ड्स द स्क्वायर लेग रीजन. वहां पे फील्डर मौजूद, एक रन दौड़ कर ले लिया. और हमारे स्क्वायर लेग के खिलाड़ी अलीम भाई, जो उस्मान पटेल के डुप्लीकेट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी आप देखोगे. अलीम भाई, क्या स्माइल है प्यारी सी. अगली गेंद, स्विंग एंड मिस. आजकल मार्केट में सब चीज का फर्स्ट कॉपी निकला है, चाहे वो जर्सी हो, रोलेक्स की घड़ी हो, या उस्मान पटेल भाई हो. जी, वो आपकी टीम के ओनर की गलती. 25, 4 ओवर, 4 ओवर की समाप्ति पर 25 रन है स्कोर. आर्यन के हाथ में गेंद थमा दिया गया है. ट्रायो फिटनेस प्रेजेंस लोखंडवाला चैंपियंस लीग सीजन 7 के दूसरे दिन, और ये आज ये मैच और सब कुछ का निर्णय आज फाइनल होगा. पटकी हुई गेंद, उतनी बढ़िया शॉट, वहां पे फील्डर बने दर्शक, गेंद को इतनी प्यारे तरीके से टटोला. कवर्स के रीजन पर 6 रनों के लिए दूसरा 6 आता हुआ ऑफ साइड पे. संदेश्वर तक के बल्लेबाज, बहुत ही एक अनुभवी बल्लेबाज है संदेश्वर तक. अगली गेंद बाहर फैलाते हुए अंपायर ने किया वाइड का इशारा. 32, 32 रन है स्कोर.
हमारे प्रिय मित्र संदीप के 32 दांत है और उतने ही रन हुए हैं, 32 रन। फुल टॉस और यहां पे रन करके गेंद को रोकने के प्रयास में 4 रन। 36। बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय वैग्राम्स, हमारे स्पॉन्सर। फुल टॉस गेंद एक और, लेकिन इस बार बल्ले पे ठीक से आई नहीं गेंद, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पे खेल दिया, वहां पे दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है संदेश्वर तक ने। और 37, स्कोर नहीं बढ़ रहा यहां पे, रन वही रुका, थमा, धीमा। फुल टॉस, वहां पे साई खराट मौजूद, उन्होंने कोशिश नहीं की कैच लेने की, उन्होंने सोचा कि हम 1 रन दौड़कर ले लिया और ये त्रिपाठी 360 नहीं 720 घूमे और थ्रो करने का प्रयास किया, तब तक बैट्समैन ने 2 रन पूरा कर लिया। अच्छी गेंद, वहां पे अलीम भाई गेंद के पीछे और गेंद उनके आगे, लेकिन वहां से अमन दौड़कर आके गेंद को पकड़ लिया। बहुत ही बढ़िया गेंद, हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा बल्लेबाज को यहाँ पे, और बल्लेबाज भी बुरी गेंदों को मेक श्योर कर रहे कन्वर्ट करे। सो एक अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का नजराना यहाँ पे नजर आता हुआ। अगली गेंद खेल दिया है कवच के क्षेत्र में, वहां पे रविंद्र मौजूद। 5 ओवर की समाप्ति पर 41। रविंद्र जडेजा जो अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम में जा चुके हैं, उनकी यहाँ पे रविंद्र यहाँ पे खेल रहे हैं 7 नंबर की जर्सी पे सीएसके को सपोर्ट करते हुए। अब आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए हर्ष भोसले, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन यहां पे टूर्नामेंट में सटीक अंपायरिंग के कारण उन्हें गेंदबाजी करने का भी एक अवसर मिला है और उनके कप्तान संतोष काफी संतोष हो गए उनके गेंदबाजी से। फ्लाइट गेंद आगे की तरफ और छगाते हुई बल्लेबाज को, बल्लेबाज ने बैट इतनी जल्दी घुमाई, गेंद कल आने वाली है। फिर से वही गेंद थोड़ी और नजदीक, बल्लेबाज ने वेट करके नीचे से लॉन्ग के क्षेत्र पे खेल दिया और विनोद पटेल जो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, वहां पे सेफेस्ट प्लेयर है इस ग्राउंड के। स्कोर 42। स्टेप आउट एंड ये आउट। हर्ष भोसले विकेट लेके बोलते, अद्वैत सावंत को स्टेप आउट करके मारने की कोशिश और लायंस के विकेट कीपर कैप्टन संतोष त्रिपाठी कोई गलती नहीं की है, उन्होंने जिंदगी में कभी गलती की नहीं है ऐसा उनका मानना है। चतुर है वो, चतुर कीपर। अगली गेंद और ये गेंद हवा में, वहां पे पवन जाधव मौजूद और उनकी हाथ नहीं, उनकी हाथों में सॉफ्ट से कुशन से जहां पे गेंद आके आराम से रेस्ट कर लेती है, उतनी बढ़िया और सेफ फील्डर है ये। अगर किसी भी बॉल को आराम करनी होती है तो 2 जनों के हाथ में जाके ठेल जाते हैं, वो है एक विनोद पटेल और दूसरे है पवन जाधव। और अगले खिलाड़ी सौरभ गुप्ता,
तेज गेंदबाज है लेकिन बल्लेबाजी में भी अपना कारनामा अच्छा खासा दिखाते हुए सौरभ गुप्ता है स्ट्राइक पे। हर्ष भोसले, पटकी हुई गेंद, पुल करने का प्रयास और गेंद गई सीमा रेखा के बाजू से बाहर। 1 रन डिक्लेयर के लिए। सीमा और रेखा को नहीं पसंद आया गेंद, इसीलिए पीछे की तरफ ढकेल दिया। 1 रन के लिए सौरभ गुप्ता खाता खोलते हुए 1 रन से स्ट्राइक पे। हर्षु जो बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं। अगली गेंद और ये एक अच्छी गेंद